Dear students, welcome to the course Science of Consciousness in Ancient India, and this is lecture 21. We are going to continue the epistemology of Vedanta Darshan, and after that I will explain you the metaphysics, the complete structure, how the creation or the manifestation happens as per the understanding in the Vedanta. So, you see epistemology, I told you that Pramana Mimamsa, Vedanta scholars accept 6 Pramana. So, 4 are, you are familiar with the 4. There is no disagreement regarding the concept of these 4 with the Nyaya Vaisheshik, because these were already presented by the Nyaya Vaisheshik scholars. Now, they are bringing 2 more Pramana as a kind of instrument to see the reality. So, Arthapatti is the 5th one. It is a process of assuming some unknown fact in order to account for a well-known fact, which is otherwise inexplicable. This is अर्थापत्ति. एक well-known fact से आप एक unknown fact को identify करने की कोशिश कर रहे हैं. It's a kind of inference only. But they put it separately. There is a specific logic which Vedanta scholars put to accept Arthapatti as a separate means of cognition, other than the inference. You can understand by the example. Let's take an example. Arthapatti kya hai? Suppose you are trying, you have seen a lot of things like, for example, very simple example in the current scenario. If in some kind of state or in some kind of region, some kind of violence is happening continuously, you are getting the information or the news about violence more or less frequently within or repeatedly one or the other week. So, after some time what happens, there becomes a kind of perception about that particular region that this is violenced area or the area which is dominated by the violence. आप उसको बना लेते हैं. भले अब क्या हो, current situation may be completely different, like for months nothing would have happened. But because sometime there was a complete repeated frequency, that's why there is a perception about that particular area that this is violence dominated area. This becomes a kind of notion. In the same way, in some cases, now you cannot put this kind of understanding under inference. क्योंकि जैसे ही आप कहना शुरू करेंगे, so suppose there is a person, take an example, there are 2 friends. One is and there is a debate going on between the 2 friends by or you can say regarding the same subject, that this area is violence dominated. ठीक है, अब आप debate कर रहे हैं अपने दोस्त से. Your friend is giving the examples continuously to prove that this area is a violence dominated area, and because in the past there were several incidences which were present, so the person would put all the examples in front of you to identify that whatever notion he is possessing, that is right. ठीक है, maybe you would also argue that right now there is no such kind of situation. Currently there is no such kind of violence. आप भी अपना बात रखेंगे. अब इस केस में कौन गलत है? Whatever examples or whatever data the person is presenting to prove that area as a violence dominated area are neither mere an assumption, केवल inference तो नहीं है उसका, हुआ था, reality थी, it was a direct perception. Clear? That is already present with the data. You cannot deny that it is not there. So, direct perception is involved. According to direct perception, there was a notion that was based on inference. Again, it was based on direct perception only. So, you cannot deny the factual information presented by your friend to show or prove one's argument that this area was violence dominated area. Direct perception and inference both are involved, and still you want to prove your argument. अब आप अपना पक्ष सिद्ध करना चाहते हैं कि right now this area is not violence dominated, this situation has completely changed. अब आप क्या करेंगे? So there is a kind of you can say
ओवर रूलिंग ऑफ द डायरेक्ट परसेप्शन एंड इन्फरेंस बोथ, इन दोनों को ओवर रूल करना पड़ेगा। और अभी तक आपको जितने प्रमाण मैंने पढ़ाए उसमें से ऐसा कोई प्रमाण नहीं था जो डायरेक्ट परसेप्शन और इन्फरेंस दोनों को ओवर रूल कर सके। ओवर रूल करने का मतलब उस चीज़ को इग्नोर करना कि दो यू आर राइट स्टिल आई एम गोइंग टू not to accept these kind of things, not, or you can say I am going to refute your side. So they brought up another, that is arthapatti. You are trying to assume some unknown fact. अब अभी क्या कर रहे हैं, in the current example this person is trying to prove that this area is not violence dominated area, this is unknown fact. But in order to account for a well known fact, which is otherwise inexplicable, मतलब कि अब आप जो चीज़ प्रूव करना चाहते हैं उसको आप और किसी तरीके से प्रूव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक किसी ने उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दी नहीं है। देयर इज़ नो डेटा पब्लिश्ड विच कैन से दैट दिस इज़ नॉट अ वायलेंस डोमिनेटिंग एरिया। कोई डेटा पब्लिश आपके पास है नहीं, आप शो नहीं कर सकते, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे आप ये साबित कर सके। तो अब आपको एक दूसरा प्रमाण लाना पड़ेगा। एंड फॉर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन अ वेरी सिंपल टर्म, from Vedic corpus, Vedanta scholars identified one example, and there is a very popular name in Sanskrit text that is named as Devadatta. Devadatta is very popular name in Sanskrit text. So there is a person Devadatta and he is very fat, बहुत मोटा है, ठीक है। देवदत्त बहु पीनः अस्ति, that means Devadatta is a person who is very fat. Now nobody ever see him eating in the daytime 12 hours from morning to evening or night. There is not a single person who sees him eating. कोई भी एक प्रमाण नहीं है उसके बारे में ये सिद्ध करने का कि ये दिन में खाता है, एक भी व्यक्ति नहीं है। अब जब कोई प्रमाण नहीं है तो अब मोटा कैसे हो रहा है? How he is becoming fatter day by day? So there must be something, there must be some kind of logic hidden behind that to explain that condition, that Devadatta does not eat in daytime but still he is becoming fatter and fatter day by day. How to prove this statement? What is the justification? What is the logic behind that? How I am going to prove that statement? So you are going to bring some or the other kind of logics. First logic, maybe he would be eating in the night. जब सब सो जाते हैं तो चुपचाप खाता होगा, पहला logic, the first possibility. So let us go and investigate, put a bug in the room and then investigate रात को क्या करता है, ये कितना ठूस ठूस के खाता है, कैंटीन में जाकर देखते हैं रात को ये कहाँ कहाँ जाता है. So you would start investigating about Devadatta, what he does in the night. Second, अगर आपने नाइट में भी उसे खाते हुए नहीं पकड़ा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? इसका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस ज़रूर है. पहली बात तो दिन में कोई बिना खाए रह नहीं सकता. Still he is alive and living comfortably and without eating. And third was and when we try to investigate that what he does in the night, then also we did not find that he is eating. Then there must be some kind of physiological imbalances inside the body, that's why he is becoming fatter. So maybe there is a deposition of water content under the adipose tissue, that's why he is becoming fatter because of the presence of edema, local swelling in the body. Maybe the uric acid content has gone up. There are so many possibilities, but there again these are the hypothesis assumptions. You need a solid data reference to prove it. अब आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, उसको मनाना पड़ेगा कि किसी तरीके से उसका टेस्ट हो, ये सब पता चले कि ये हो क्या रहा है. So there is a chance, there is a condition when your these four pramadas, direct perception, inference and verbal testimony along with comparison, they become you can say incompatible to explain what is happening, the situation. In the same way, there are some kind of metaphysical instances like somebody is able to see some kind of ghost in the night and the others are not able to see, but still after some days there were
in the beginning there was only one scholar who was able to see that thing. After few days there are 2 or 3 scholars who are claiming the same thing. Now you need to investigate, क्योंकि आपके ये 4 प्रमाण काम नहीं कर रहे हैं. जब आपके स्टिल एग्जिस्टिंग प्रमाण काम नहीं करते हैं तो आपको कोई एक ऐसी चीज़ लानी पड़ती है. यू हैव टू यूज़ अ काइंड ऑफ टूल विच कैन एक्चुअली ओवर रूल दिस 4 बेसिक फंडामेंटल मीन्स ऑफ कॉग्निशंस. दैट इज अर्थापत्ति. अर्थ की आपत्ति करनी पड़ती है. एंड देन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस ऑफ इन्फरेंस, डायरेक्ट परसेप्शन, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी. वो चारों उसमें आ जाएंगे. सो इन दैट केस यू सी अर्थापत्ति इज द बिगेस्ट क्राइटेरिया, द टॉप मोस्ट. वी ईच टाइम वी एक्चुअली ब्रिंग अ काइंड ऑफ मीनिंग फर्स्ट to create a hypothesis, and then we start investigating deeper and deeper by the use of either direct perception or by inference or by verbal testimony or by comparison. ये उनका सबसे बड़ा रोल आया. और ये आया कहाँ से? बिकॉज व्हेन दे स्टार्टेड स्टडिंग with Purva Mimamsa deals with the interpretation of Vedic text. A single Vedic mantra can have multiple meanings, and then there was an urgent need to use the Arthapatti Praman. एक ही मंत्र का, एक ही लाइन का, एक ही सेंटेंस का जब इनफाइनाइट नंबर पॉसिबिलिटीज़ हो, मीनिंग की पॉसिबिलिटीज़, तो कौन सी मीनिंग सही है, उसके लिए अर्थापत्ति जरूरी है. Then from there itself the concept of Arthapatti came into the mind of scholars, that each time when we are going to decode a single sentence, we have to follow a procedure of direct perception, inference, verbal testimony and comparison, but it would be coming under the same bigger head of umbrella head, that is Arthapatti itself. हर सेंटेंस का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है, तो हर केस में आप इमीडिएटली केस सॉर्टेड नहीं लिख सकते. आपको उसमें बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा. आपको एक ही घटना के अगर 100 पॉसिबल डायमेंशन थे तो सबको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. दैट्स वाई दे ब्रॉट अर्थापत्ति इन द सीन. एंड देन आफ्टर अर्थापत्ति दे brought another one, that is Anupalabdhi, because न्याय वैशेषिक scholars accepted अभाव as a substance. ठीक है ना, द्रव्य माना था उन्होंने, पदार्थ माना था. पदार्थ means that which is a kind of substance in existence. So पदार्थ is अभाव पदार्थ कैसे हो सकता है, ये वेदांत के स्कॉलर्स को डाइजेस्ट नहीं हुआ. क्यों? Because you are yourself saying that there is an absence of something. So how you are treating absence as existence? There is a contradiction. Absence को existence कैसे मान रहे हो? इस चीज़ पर उन्होंने वो बात पकड़ ली. न्याय वैशेषिकों की ये चीज़ जो है थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही थी, उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ये आप सही नहीं कह रहे हैं. इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सबस्टेंस, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ मीन्स ऑफ कॉग्निशन वेयर यू कैन ओनली डिक्लेयर दैट देयर इज मेनली एब्सेंस. और यू कैन से लाइक अभाव इज व्हाट you see. Vedanta recognizes abhav as abhav padarth, as abhav does not mean a void. We know non-existence of the jar and not the non-existence of itself. So Anupalabdhi enables us to know the non-existence of a particular cognition. Means there are two sentences, you see the difference. There is no remote, ठीक है, on this table. There is no remote on this table. So this is one sentence, and this absence is in comparison to the presence of remote on this table. So absence actually में exist कर रहा है या इस वस्तु के presence ना होना ही बस absence है. There are two possibilities. You are directly identifying the absence, or you are identifying, or you are trying to identify the non-presence of this object. ठीक है, अब दोनों वर्ड बहुत different है, absence and non-presence. Because absence itself can be of 4 types: प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव. 4 तरह का absence हो सकता है. We can actually never identify absence as a substance.
we always try to infer absence as non-presence of something, non-presence of something, क्योंकि absence अपने आप में कभी एक substance की तरह identify हो ही नहीं सकता. We always try to identify the non-presence of something. In case of प्राग अभाव मतलब पहले से ही कोई चीज़ नहीं है कहीं. For example, there is no horns, लेकिन वो तो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, बिगिनिंग, वो क्या है, वो तो एब्सोल्यूट एब्सेंस है. रैबिट में हॉर्न्स का ना होना, दैट इज एब्सोल्यूट एब्सेंस, बिकॉज एग्जिस्टेंस में वो कभी आया ही नहीं है. प्रायर of its existence means this table does not have this remote, so before I put it there was an absence. This is prag abhav. So again you are identifying the absence of this remote or non-presence of this remote. You are just identifying non-presence of this remote on the table, because ये हमेशा के लिए absent नहीं है, ये किसी और जगह पे है, तो इसका absence नहीं हुआ, इसके existence का absence नहीं हुआ. जब हम सबस्टेंस कंसीडर करते हैं किसी चीज़ को, एज पर द न्याय वैशेषिक, दे आर पदार्थ, सबस्टेंसेज, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन. तो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन में हमको पहले समझना होगा कि इसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए. तो एब्सेंस अपने आप में कोई एग्जिस्टिंग एंटाइटी है ही नहीं. वी ऑलवेज ट्राई नॉन प्रेजेंस ऑफ समथिंग. We always catch or comprehend the non-presence of something. In Prag abhav, we catch this non-presence with respect of its presence on this table. If you go for Pradhwans abhav, matlab the building PPA is there and after few days the PPA is demolished. So after destruction there would be non-presence of PPA. In the same way, Atyant abhav and Anyonya abhav. Atyant means absolute absence. There are no horns on the rabbit. Or that means you can say there is non-presence of the horns on the rabbit. That's why it is absolute absence. Anyonya bhav means mutual absence. That means this entity is present on this table, but it is not present in this table. This is relative. Both the tables are visible to you. So in case of relative absence also, we always try the non-presence of an entity. So actually what they argued, we can never take or you can say consider abhav as a substance. सबस्टेंस या पदार्थ की परिभाषा ही यही है कि वो चीज़ जो अस्तित्व में है. तो अभाव अपने आप में अस्तित्व में कभी नहीं होता. इवन इफ यू आर ट्राइंग टू एड्रेस वॉइड. वॉइड क्या होता है नॉर्मली? वॉइड इज ट्रांसलेटेड वर्ड कमिंग बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, दैट इज शून्य. पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ाया था आपको कि शून्य, जीरो, वॉइड एक बराबर नहीं है, सेम चीज़ें नहीं हैं. इवन द डिज़ाइन और द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट द सेम. व्हेन वी क्रिएट ज़ीरो, तब क्या मतलब है? ज़ीरो और शून्य और वॉइड में क्या डिफरेंस है, किसी को याद है? यू कंसीडर योर कीबोर्ड. सी, this keyboard has a zero marking. So see the structure of this zero. It is oval. It's not perfect circle. I told you when we draw in romanized version zero, it is oval. It's not perfect circle. What is perfect circle? Force. पेरीफेरी पर पूरा फोर्स बराबर होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तभी सारा का सारा फोर्स कहाँ पे आएगा? सेंटर. सो ये आपका परफेक्ट सर्किल है. इसको हम शून्य कहते हैं. शून्य का कॉन्सेप्ट केवल और केवल भारत के पास है और कहीं नहीं है. शून्यवाद हमारा ही है. शून्य इज नॉट इक्वल्स टू द जीरो. दैट्स वाई वॉइड का कॉन्सेप्ट शून्य के पैरेलल चलता है. शून्य इज फुल इटसेल्फ, कंप्लीट इन इटसेल्फ, बिकॉज द होल ऑफ द फोर्स इज एट द सेंटर. इट्स नॉट एम्प्टी. खालीपन का नाम शून्य नहीं है. ठीक है, इसलिए शून्य का जो कॉन्सेप्ट है वो परफेक्ट सर्कल का कॉन्सेप्ट है. वाइल जीरो इज समथिंग एल्स. इट्स ओवल इन शेप. दैट मीन्स देयर इज एन इम्बैलेंस टुवर्ड्स द साइड्स, टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज. किसी दो पॉइंट पे वो खिंचाव महसूस कर रहा है, तब वो ओवल बनता है. ठीक है, there is a difference. That's why you see anupalabdhi is basically non-apprehension of the presence of some object. I am not able to perceive some object, that's why I say that this is absent.
This is the only thing. Absence in itself is not a kind of substance. पदार्थ नहीं है. It's not an object of cognition. It can be a means of cognition when we don't perceive something. So they brought अनुपलब्धि. They brought another word for that. क्योंकि हर सिस्टम का स्कॉलर बहुत कॉन्शियस है कि कहीं आने वाले लोग उसको पढ़े तो कंफ्यूज ना हो जाएं. दैट्स वाई व्हेन दे ब्रॉट अप अ कंप्लीट न्यू आइडिया दे चेंज द टर्मिनोलॉजी ऑल्सो. अभाव इज कंसिडर्ड एज अ सबस्टेंस और पदार्थ बाय न्याय वैशेषिका, सो दे ब्रॉट अनदर वर्ड अनुपलब्धि to identify as means of cognition. There is non-apprehension of the presence of some object. This is the difference. That it becomes a kind of pramad. Pramad, how you are going to use the non-apprehension? For example, there is a person who witnessed a murder. ठीक है? And now the person was able to see that there was no weapon like a knife present inside the room, because the witness has already seen that there was the non-apprehension of the knife, so it becomes an evidence. If somebody tries to manipulate or fabricate some kind of evidences at the murder or the crime scene, then automatically the statement of the person would be an evidence. It can become a means of cognition to justify or identify or investigate a situation, but it cannot be act or cannot be considered as a substance itself. ठीक है? This is a difference. This understanding is brought by Vedanta scholars because they were again justifying or identifying or reading the statements of the Vedas. Vedas are also having anupalabdhi a lot of places, because there is a Nasadiya Sukta in the Veda which says in the beginning there was nothing like Sad, nothing like Asad, the same thing which is characteristic of avidya. Sad asadbhyam anirvachaniyam. I don't know that I am ignorant. I don't know that I am not ignorant. Both the categories go hand in hand together. एक टाइम पर आप दोनों कैटेगरीज को एक्सपीरियंस करते हैं और इसीलिए आप कभी नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे कि मैं इग्नोरेंट हूँ या मैं बहुत इंटेलिजेंट और फुल ऑफ नॉलेज हूँ. The same thing is Nasadiya Sukta. In the beginning, what was in existence? This is a question of the Rishi. जब सृष्टि का आरंभ शुरू हुआ था तो क्या था ये बताइए. So they say like ना सत आसीत ना असत आसीत, ना सद ना असत. ना तो ऐसी कंडीशन थी जिसको आप कह सके कि एग्जिस्टेंस था, ना ऐसी कंडीशन थी जिसको आप कह सके कि नॉन एग्जिस्टेंस था. इन दोनों की कैटेगरी के बियॉन्ड जिसका डिस्क्रिप्शन है वो था. वो क्या था? वो शून्य था. उस शून्य की परिभाषा वहाँ से शुरू हुई है, तब वो आर्यभट्ट उसको कोड करके लाते हैं. दैट इज आवर मैथमेटिक्स, आवर गणित. गणित मतलब गणन करना, कैलकुलेशन उसका कलन करना, दोनों में अंतर है. वन इज गणन, ठीक है, इससे बनता है गणित. वन इज कलन, इससे बनता है काल, जिससे बनता है कैलकुलेटर, जिसको आप कैलकुलेटर, कैलकुलस ये सब पढ़ के आए ना, इतना माथा बच्चे की है. सो ये सब दोनों में देयर इज अ प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन दैट. गणना इज अ काइंड ऑफ you can do it randomly on the fingers, at the tip of the fingers. This is gadan. Kalan is calculation. That means you are trying to, for example, 2 square कितना, 4 square, then go on. This is kalan. आप add on करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो भी कैसे, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन इस तरीके से करते हैं, नॉट लाइक अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन. स्क्वायर तो सिंपल हो गए. और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी चीज़ की, आप ऐड ऑन करते जा रहे हैं, आप बढ़ाना चाहते हैं क्वांटिटी को, लेकिन आप कैसे एक्सपोनेंशियली उसको इंक्रीज कर रहे हैं. दिस इज कलन, जिससे काल की गणना हो रही है. जब आप उसकी सिंपल गणन का मतलब होता है आप कभी भी गणना कर सके. गणना मतलब यू आर एबल टू डू इट एट द फिंगर टिप्स. दैट्स वाई आपकी फिंगर्स में जितनी कैपेसिटी होगी वहां तक आपकी गणना पूरी हो जाएगी. सो वी हैव ओनली 0 to 9 डिजिट्स फॉर गणन. केवल यही बेसिक डिजिट्स हैं हमारे पास जिनकी गणना की जाती है.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से शुरू करो 9 पे ख़त्म हो जाएगा, यही आपकी फिंगर टिप्स पर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ आ रहा है? ये गणन है, इसी से बनता है गणित। तो आर्यभट्ट की जो आर्यभट्टियम, द टेक्स्ट विच इज ऑथर्ड बाय आर्यभट्ट इज ऑफ गणित, not for calculus. There is a difference. Last time I told you that chemistry is not Shastra. Remember, I will ask this question again in the end semester examination also. What is Shastra? Define the Shastra. Your chemistry is not the Shastra. क्यों? I told you Shastra is that which actually incorporates prescription to do something, prohibition from doing something और prescribe the daily routine behavior. ठीक है? अब आपने देखिए, हम लोग जो पढ़कर आए हैं, केमिस्ट्री किसकी पढ़ी है? कौन सी बुक पढ़ी थी जब आप तैयारी कर रहे थे? अच्छा हाँ, हाँ ठीक, बिल्कुल। और फिजिक्स किसकी पढ़ी है? HC वर्मा की। किसी भी बुक में दोबारा जाकर देखिएगा, once you are studying the nuclear fission and fusion, do you find a single line that this is this kind of reactions are not supposed to be done or used or created or studied because they are destructive in nature? कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कोई नहीं बताएगा कि ये नहीं करना चाहिए। इन द सेम वे किसी भी बुक में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा लाइन कि ये करना चाहिए। Why? For example, whole of the organic chemistry, जब आप बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, you are able to prepare a acridine dye in the lab and then also uses of the acridine dye, ठीक है, नीचे लिखा होता है ना uses of the acridine dye। उसके बाद आपने उसको पढ़ लिया, अच्छा हाँ यहाँ यूज़ होता है। उसके बाद किसी ने बताया कि एक्रिडिन डाई से ही आर द कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, दे कैन क्रिएट दिस काइंड लेवल ऑफ कैंसर्स, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन द ऑन द ह्यूमन बींग्स। नहीं लिखा मिलेगा, नहीं लिखा मिलेगा, ऐसी कोई चीज़ लाइन नहीं लिखी मिली है। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र नहीं है। शास्त्र वो होगा, लेकिन जब आप ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी एनी काइंड ऑफ इंडियन टेक्स्ट लाइक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, रस गंगाधर, रस रत्न समुच्चय, I can take list of the granthas. They all have the prescription of the three. If they are going to explain the characteristics of the Vat, or you can say like Shak group मतलब Shak varga. Shak varga includes all the vegetables, all the edible vegetables, all the non-edible vegetables, all the poisonous vegetables, and along with that each and every line would be having the prescription. इतने अमाउंट में अगर आप लेंगे तो इसका आर्सेनिक या सल्फर इतने कंटेंट में आपकी बॉडी में जाएगा और इसका ये रिएक्शन होगा, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपथ्यम, अहितकारी है। अभोज्यम, नहीं लेना चाहिए। और in the same way, for example, if you mix ghee and shahad, that means ghee prepared from the milk and shahad honey, सब मात्रा में मिला दीजिए in equal proportions, they become poisonous, they act as a slow poison, but nobody would tell you currently। आप ब्रेड पे शहद भी लगाएंगे, घी भी लगाएंगे और बढ़िया से खाएंगे, सब कुछ लगाकर खा जाते हैं। स्लो पॉइजन, धीरे धीरे एक्युमुलेट हो जाएगा और बाद में जाकर after a longer period of time you would see the results. So this is a shastra. That's why I told you in the current education system, whatever disciplines or subjects we are understanding, whether it is chemistry or physics or something else, they are not having the three things together: what should be done, what should not be done, and what should be regularly done. That's why they are not considered to be exactly equivalent to the shastra. Once you take the ancient Indian systems or any kind of text of knowledge, it would be having the three things together. इसलिए वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले लोग नहीं थे, इसलिए वहाँ 2 वॉर नहीं देखे ह्यूमैनिटी ने, और हम सब देख रहे हैं क्योंकि हम अपनी क्यूरियोसिटी पे कंट्रोल रखना भूल चुके हैं. It's good that you have a curiosity of what kind of nuclear reaction it is going to happen, nuclear fission is what, but you need to understand its long term effects. अगर वो नहीं पता है तो आप ऐसे, अगर आपको बता दिया गया होता तो आपने वो काम नहीं किया होता. 2 बार आपको पूरी के पूरे जो युद्ध झेलने पड़े वो नहीं हुए होते. आज हर देश लड़ रहा है, वो नहीं हो रहा होता. So these kind of things are available in Indian corpus. That's why they are Shastra.
So you remember, definition of the Shastra is completely different from our superficial translation of the Shastra as discipline or subject. In the same way, here Anupalabdhi is a technical term of the Vedanta scholars that is brought up as a means of cognition to explain a lot of things. After that, Vedanta Darshan or Vedanta scholars started explaining the metaphysics, that means the manifestation process. Then they brought another concept that is understood as superposition. Superposition. Right now in our modern vocabulary terminology, we have this word superposition. So first of all, what they understood as vastu and avastu. Again, these are the technical terms, you cannot translate vastu. See the definition. Vastu is vasati tishtati anen iti vastu, and avastu is your ignorance. Whatever is in existence, that becomes vastu. So next time if I say like vastu, in general term it is any object, that becomes vastu, but in reality or in here in context of Vedanta Darshan, whatever is in existence, that is vastu, that is only vastu, and whatever is our ignorance, that is avastu, not real. So when there is a superposition of avastu on the vastu, it is known as adhyarop. Now this is again the technical term of Vedanta, adhyarop. In English you can roughly understand adhyarop as superposition. Superposition of the two things. When I told you in the last class how you can understand the two powers of avidya or ignorance, one is the covering. For example, the board is your Brahman and the screen is the covering principle of ignorance. Then there is an artificial creation which is being projected, that becomes Vikshepa Shakti. So Avaran and Vikshep are the two powers of the avidya or ignorance. So what is happening actually? Avidya is covering vastu, that is existence, the real existence, that is Brahman, and this process of covering Brahman with avidya is adhyarop or superposition. The phenomena of adhyas or superimposition is considered in the Vedanta Darshan to explain that ignorance covers the real nature of the pure consciousness through its covering principle, that is Avaran Shakti, thus conceals its real nature and projects an artificial creation on that through its projection power, that is Vikshep Shakti. When the realization of pure consciousness happens, then superposition dissolves. When you are going to realize what the board is actually, you have to remove this cover, इस screen को हटाना पड़ेगा, and the ultimate state is restored. This process is known as apavad. So adhyarop का opposite क्या हो गया? Apavad. Removing of the ignorance is apavad. There are two technical terms. Once vastu is being covered by avastu, it is adhyarop, and once you are going to dissolve the avastu, that it becomes apavad. That means removal of the ignorance. After the covering, what is happening slowly? This diagram is having three parts. I will explain each of the diagram separately in each of the slides. See, first diagram, the first stage, when your pure consciousness Brahman gets covered with avidya, that is ignorance, you undergo automatically three stages of deviations. Automatically the consciousness undergoes the three stages of deviation. First is deep sleep, second is dreaming, and third is wakened. Jagrat, Swapna and Shushupti. Jagrat, Swapna and Shushupti. Second stage, you see in the second diagram, these stages are equated with some kosh. This is the kosh structure. कैसे कवरिंग बन रही है? ये जो कंसीलमेंट है वो सिंगल लेयर नहीं है, इट्स नॉट सिंगल लेयर. जस्ट लाइक यू आर सीइंग राइट नाउ, देयर इज ओनली वन स्क्रीन, but the covering we are possessing is not having a single layer, it is having multiple layers. So the second stage is kosh structure, and the third stage is the body structure. किस तरह की bodies create हो रही हैं? किस तरह की body का मतलब है? Suppose this is the pure consciousness Brahman. First conceal it with the ignorance, the first layer. So the first layer creates Sushupti stage, that becomes Anandamaya kosh. You have covered it with a polythene cover. तो पहली लेयर चढ़ाई तो बन गया आनंदमय कोश. सेकेंड विज्ञानमय कोश, थर्ड मनोमय कोश, एंड फोर्थ प्राणमय कोश. सो सेकेंड स्टेज, दैट इज विज्ञानमय, मनोमय एंड प्राणमय, 3 more coverings.
3 more coverings together generate ड्रीमिंग स्टेट, स्वप्न। जब आप सो रहे होंगे तो ये 3 स्टेजेस, ये 3 कोश एग्जिस्टेंस में होंगे, इन्हीं की फंक्शन होगी। डीप स्लीप में केवल एक कोश रह जाता है, दैट इज आनंदमय कोश, वन शीथ। एंड इन द लास्ट स्टेज अन्नमय कोश, द लास्ट एंड द covering, that means 3, 4, 5, fifth covering is annamaya, that is visible to us, but right now whatever visible, that is gross structure. Annamaya kosh gives us the gross one, gross stability, gross form. So this annamaya kosh becomes our external most covering, that is sheath. And with relation to the sheath itself, you have the bodies. The first one, when you cover the pure consciousness with the first layer, then Anandamaya kosh, after being covered by Anandamaya kosh, it is the causal body. Then again you put up the 3 more sheaths, Vijnanamaya, Manomaya, Pranamaya, it would become subtle body. And lastly, when you are going to have Annamaya kosh, the last cover, it becomes a gross body, हमारी ग्रॉस बॉडी। सो तीनों लेवल पे काम होगा। अब ये तीनों आप डायग्राम से देखिए, सेम चीज़, सेम स्ट्रक्चर इज अवेलेबल इन दिस डायग्राम। एट द फर्स्ट लेवल ब्रह्मन इज कवर्ड विद आनंदमय कोश, एट द सेकेंड लेवल यू सी देयर आर 4 कोशास, एंड एट द थर्ड लेवल देयर इज द लास्ट वन अन्नमय कोश। सो दिस इज आवर करंट एग्जिस्टेंस, हम अभी इस तरह से हैं। इतनी कवरिंग्स जब रिमूव हो जाएंगी तब पता चलेगा कि अंदर क्या था, सबसे सेंटर पॉइंट पे क्या था जिसको कवर कर दिया है, जिसको कभी देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, जिस पर डिस्कोर्स किया ही नहीं है। सो वन बाय वन you can see that the diagrams are explained in detail in the next slides, and from these slides itself we can have few of the questions. After in the next class I will explain each of the kosh one by one, ये बनते कैसे हैं, ये these 4 sheets or these 3 bodies, what is the function, how they function in the dream, how they function in the deep sleep. So that is the detail. From today's lecture we can have few questions which are coming from the same slide which I explained in the previous lecture also, right? Like Brahman and Avidya characters, we have already discussed it. What is Vedant, we have already discussed it. Now you can see the fill in the blanks. For example, the process of assuming some unknown fact to account for a well known fact which is otherwise inexplicable is known as अर्थापत्ति, not अनुपलब्धि। किसी अननोन फैक्ट को किसी वेल नोन फैक्ट के थ्रू, के यू आर एज्यूमिंग एन अननोन फैक्ट फॉर अ वेल नोन फैक्ट दैट इज अदरवाइज इनएक्सप्लिकेबल इज अर्थापत्ति। याद रहेगा, अर्थापत्ति याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कोई ट्रांसलेशन नहीं है इसका, इट्स नॉन ट्रांसलेटेबल वर्ड। अर्थापत्ति, हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अर्थ प्लस आपत्ति। और अगर बहुत आसानी से याद रखना है तो ऐसे याद रखिए, जब डायरेक्टली उस सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन में आपत्ति आ जाए, आपत्ति का मतलब ऑब्जेक्शन, when you face any kind of objection in identifying the correct meaning of the sentence, then you then you try to bring out some another kind of means of cognition, that is known as arthapatti. So you split the word, it would become arthapatti. Vastu is what? वसति अनेन इति वस्तु, वसति तिष्ठति अनेन इति वस्तु। So that which is in existence is vastu or Brahman. If you are being asked this same question, write down one word for them. वस्तु के लिए एक वर्ड लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ब्रह्मन। ठीक है। अवस्तु अविद्या, अवस्तु is what? Ignorance, avidya. Adhyarope is superimposition of what on what? Avastu on vastu. Apavad is removing of ignorance, that is apavad. So these are the few questions which can be there from the current slide. For this lecture this is sufficient. Thank you.